नहीं पहले बता दूं that it's not my voice. I edit my voice. So ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मैंने आवाज़ एडिट करके ऐड की है. स्कूल में कुछ काम था इसलिए we went there due to some papers of teachers and हमने बच्चों को कहा कि भाई सफाई के लिए स्कूल में और my kids to go outside of the school and clean all the garbage out of the school. Sister also with me, so I gave her to do this work. Kids were doing all that. It's not common only in village and short because I gave last time story में तो उन बच्चों में और मेरे स्कूल के बच्चों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं आया. Whenever my बच्चे copy king attentions their rappers and all and food schedule की और ये वो तो I strictly shouted on them that it's not good thing. But when I went there, हाँ वो स्कूल पढ़ा है, हाँ वो छोटा हाल सब की खराब है. So called American rules होती है. समझो American rules से पहले भी एक इस्लाम अल्लाह ने नाज़िल फरमाया. ठीक है, उसको और फॉलो करना था. अमेरिका को फॉलो करने की लोड़ ही नहीं है. सफाई निफ्स ईमान है. इस्लाम ने वो पका हुए के सफाई करनी चाहिए. अब चीज़ का किंगरातों की बाद में आपने उठानी. अटेंड ऑफ टुडे बच्चों से सफाई करवाती है स्कूल में. तो इससे पहले कि आप बात बताया पहले ही उठा दे. अदर स्कूल की बच्चों को अपना काम हमेशा में ये कहती कि आपको अपना मुझे मैं नहीं कहती. हम भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे. तो बच्चों को भी मैं ये कहती हूँ कि अपना काम खुद क्या करें. अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चेयर लेके आनी है ये अगर कोई सीन है तो आप वो उठ के जाए. ठीक है, अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली you can ask. But trying to do your work in your own. सफाई करवाए बच्चों से आग लगवाए मतलब उसने कुछ सादे सफाई करवा ली थी. मैंने तो बस बच्चों के पेपर्स होते सफाई करवाई. But my sisters do an extra work. As you can see in this video, she also recorded it. But the point is, चाहे स्कूल बड़ा है या छोटा है, आपकी तरबियत में रखती है जो कि आपको पेरेंट्स से मिले, जो कि आपको टीचर से मिले. बड़े स्कूलों में और छोटे स्कूलों में कोई फर्क नहीं है. छोटे स्कूल के बच्चे एट द एंड ऑफ द डे खुद उठाते हैं, लेकिन बड़े स्कूल से बच्चे खुद नहीं उठाते. They have workers, right? छोटे स्कूल के भी workers हैं, लेकिन they have to do their own work because that sheet by you, so you have to be clean that sheet. Your teacher take huge responsibility. Stand or following what the society follows.